Hello everyone, welcome to the Slate class of Physics A-Levels. In this class, we will discuss a few points about projectile motion and few questions about projectile motion. As you know that projectile motion एक ऑब्जेक्ट को आप शॉर्ट करते हो और वो एक पैराबोलिक पाथ ऑप्ट करता है, राइट? Throughout, vertical velocity is under the influence of gravity and horizontal velocity is constant. Now, by applying all these concepts, we will apply a similar concept here. Now, what are the concepts? Now, in this question, a ball which has mass of 2 kg is being rolled on a table, right? So, this table is present at vertical height of 2 meters. ठीक है? Now, predict कि ये कौन सी velocity है? क्या ये horizontal velocity है या vertical velocity? Because this velocity is along the flat horizontal surface, this is the horizontal velocity. ठीक है? So ball is coming with horizontal velocity of 8 meters per second. Now, as soon as ball leaves this platform, it will be under the influence of gravity. इसका free fall motion start हो जाएगा, ठीक है? And it will follow a certain trajectory and ultimately it will hit the ground. ठीक है? So, with the base of table, it falls at distance D. You have to find this distance D, right? For that, what you can do is आप information extract करना start कर दें from vertical motion. What is initial vertical velocity? Initial vertical velocity is 0 because all the initial velocity is along the horizontal, तो vertical component of velocity is 0. अच्छा, क्या ये प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है या सेकंड पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट डिसेंड करता है? दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट डिक्लाइन करता है, दोबारा ग्राउंड की तरफ आता है, ठीक है? तो मैक्सिमम हाइट पे वैसे भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज 0. सो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0. The vertical displacement it is falling is 2 meters and while coming downwards the acceleration due to gravity is plus 9.81. You can use this information to find out the value of time of falling. So time of falling find out करने के लिए here you can apply this second equation of motion which is displacement is equal to ut plus 1 over 2 at square. Displacement is 2 meters, time is 0 plus 1 by 2 times 9.81 multiplied by t square. यहां से आपके पास टाइम ऑफ फॉलिंग आ जाएगा, ठीक है? सो टाइम ऑफ फॉलिंग इज 2 multiplied by 2 divided by 9.81. Under root of answer is 0.639 seconds. Time of falling is 0.639 seconds. ठीक है? This is time of horizontal motion as well because the vertical motion and horizontal motion are going side by side. So how can you find out this distance? To find this distance, you have to consider the horizontal motion now. ठीक है? अब आपको horizontal motion consider करना, right? So horizontal motion consider करते हुए distance is horizontal displacement is equal to horizontal velocity multiplied by time. Your horizontal displacement is d, horizontal velocity is 8 and time is 0.639. यहां से आपके पास distance की वैल्यू आ रही है 0.69 multiplied by 8 which is 5.1 meters. 5.11 meters. 5.11 meters. So such questions can come in paper 1 as well as in paper 2. अच्छा, if I ask you कि ये projectile किस velocity से land हो रहा है, for that the velocity is horizontal velocity या vertical velocity या overall velocity. बच्चों जिस velocity से land हो रहा है that will be the overall velocity at which this ball hits the ground. So overall velocity find out करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? Horizontal velocity आपके पास पता है 8 meters per second. You need to find out vertical velocity. So vertical motion से vertical velocity find out करते हैं. Vertical velocity is equal to u plus at. Initial vertical velocity is 0. Acceleration due to gravity is 9.81 and time of falling is 0.639. From here, the final vertical velocity is coming out to be
9.81 multiplied by 0.639 and this value is 6.27 meters per second. ठीक है, let's find out overall final velocity of this projectile. So इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखें, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल फॉर्म करता हूं. This is vertical velocity, this is horizontal velocity and this is the overall velocity. आपने ये vertical velocity अभी find out की है at this point at which it is about to hit the ground and that velocity is 6.27 meters per second and throughout horizontal velocity is 8 meters per second. You need to find out this overall velocity at which ball hits the ground. So let's find out this overall velocity at which ball hits the ground. For that you have to find this velocity. आप क्या यूज करेंगे? वो जो याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है, यू टेक द हेल्प ऑफ पिथागोरस थ्योरम बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. दिस एंगल इज 90 डिग्रीज. आपके पास सेपरेटली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल वेलोसिटी भी है. So let's find out its overall velocity at which it hits the ground. For that you will write overall velocity square is equal to horizontal velocity square plus vertical velocity square. Overall velocity square is equal to horizontal component of velocity is 8 square plus vertical component of velocity is 6.27 square. यहां से overall velocity find out करते हैं. So overall velocity is 8 square plus 6.27 square whole under root and that value is 10.16 या राउंड ऑफ करके 10.2 meters per second. तो बॉल जब ग्राउंड पर हिट कर रही है, इट इज हिटिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10.2 meters per second. ठीक है, अच्छा, दिस इज पॉइंट ए. लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए and let's call this point B जिस पर वो ग्राउंड को आके हिट कर रहा है. पॉइंट A is at certain height, तो बॉल के पास potential energy है, right? Ball also has kinetic energy because it is moving. Now we know that the mass of this ball is 2 kg. So let's find out the total energies at point A. So point A के ऊपर energies find out करें. At point A, ball has potential energy and kinetic energy. Potential energy is given by the formula mgh and kinetic energy is given by the formula half mv square. Now at the maximum height, mass is 2, g is 9.81 and vertical height is 2 meters. ठीक है, और kinetic energy find out करें. 1/2 multiplied by mass which is 2 multiplied by velocity. Velocity at top is 8, so 8 square. So potential energy is 2 multiplied by 9.81 multiplied by 2 and kinetic energy is 1/2 multiplied by 2 multiplied by 8 square and this value is almost 103 joules. 3 significant figure में this value is 103 joules. Now at the point when ball is about to hit the ground, its height is 0. So what is the energy at point B? At point B the only energy is kinetic energy. Point B पे सिर्फ कौन सी energy है? Point B पे सिर्फ और सिर्फ kinetic energy है and that kinetic energy can be given by the formula half mv square, whereas the final velocity is 10.2 meters per second. So half multiplied by mass which is 2 multiplied by velocity square which is 10.2 square. Let's find out this value. This value is coming out to be almost 104 आ रही है. मैं इसको 103 ही लिख रहा हूं because rounding off में difference आया, right? So energies before are equal to energies after. जो पॉइंट A पे एनर्जी है which is sum of kinetic energy and potential energy is same as energy at point B which is only kinetic energy. That energy is constant. इसका मतलब है law of conservation of energy obey हो रहा है. Now
if I want to find this angle, और ये एग्जाम में आता है, at which the ball is landing, let's call this angle theta, right? So angle find out करने के लिए you can take the help of velocities, और ये velocity triangle आपके पास बना हुआ है. So we are willing to find out this angle theta जो कि velocity triangle में ये शो हो. बॉल आकर certain velocity से हिट कर रही है, तो उस वक्त velocity का ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के साथ क्या एंगल है, दैट एंगल इज एंगल थीटा. हम एंगल थीटा को फाइंड आउट करते हैं. हियर वी कैन अप्लाई, लेट सपोज आप tan थीटा अप्लाई कर दें. tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज 6.27 divided by adjacent which is 8. From here theta is coming out to be tan inverse of 6.27 divided by 8. That value is coming out to be 38 degrees. So ball is landing at an angle of 38 degrees with respect to horizontal. अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन कर देता हूं लाइक दिस, और मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट करता हूं, व्हाई दिस एंगल इज नॉट करेक्ट? बिकॉज projectile is not coming in a straight line, rather it is coming along a curved path. तो curved path का जो एंगल है वो स्ट्रेट लाइन के एंगल से थोड़ा सा ज्यादा होगा. सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट कंसिडर डिस्प्लेसमेंट्स. हम 2 मीटर्स अलोंग द वर्टिकल और 5.11 मीटर्स को अलोंग द वर्टिकल कंसिडर करके अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट कर देते हैं, दिस विल नॉट बी द राइट एंगल. सो याद रखना, to find out the angle of landing you have to consider velocities and velocity triangle instead of displacements, right? Let's move on to a tricky question जो कि एग्जाम में MCQs में आया हुआ. So the gravitational field strength on moon is approximately 1.6 meters per second square, right? A ball is launched on a moon with initial velocity of 12.8 meters per second at an angle of 30 degrees with respect to horizontal. ठीक है, find the velocity of the ball after 6 seconds. ठीक है, let's assume कि इस ऑब्जेक्ट का भी जो मास है that is 2 kg. ठीक है, अगर हमें मास गिवन है तो हम इसकी एनर्जीज फाइंड आउट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस कैन बी फर्दर यूज्ड टू जस्टिफाई दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड एट ऑल द टाइम्स, राइट? So जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, the first step is to resolve the given velocities. So you will resolve the given velocities into the horizontal component of velocity and the vertical component of velocity. So this is horizontal component of velocity and this is the vertical component of velocity. Horizontal component of velocity is always कौन सा component? Cos component. Angle here is 30. So horizontal component of velocity is 12.8 cos 30, which is 11.1 meters per second. And vertical component is always sine component. So this is 12.8 sine 30. So 12.8 sine 30 is 6.4 meters per second. 6.4 meters per second. Now, let's find out the time which the ball takes to reach maximum height. Because हमें इस चीज का कोई आइडिया नहीं है कि t is equal to 6 seconds पर बॉल ascend कर रही है या decline कर रही. So let's find out that time from the vertical motion के बॉल maximum height reach करने में कितना टाइम लगाती है. So along the vertical, what is initial vertical velocity? Initial vertical velocity is 6.4, right? Initial vertical velocity is 6.4. ठीक है, final vertical velocity at maximum height is 0 and upward acceleration is minus 1.6 meters per second square because object ऊपर जाते हुए decelerate करते हैं. So let's find out the time to reach maximum height. Question में ये नहीं given कि object ऊपर जा रहा है या return back कर रहा है. You have to figure it out, right? So let's find out the time to reach maximum height using the formula of acceleration, which is equal to v minus u divided by t. Acceleration here is minus 1.6, final velocity is 0, minus 6.4 divided by the time. From here the time reaching
Time taken to reach maximum height is 6.4 divided by 1.6 and that is 4 seconds. अब situation clarify हो चुकी है that ball has reached its maximum height in 4 seconds. तो further 2 seconds में ball will descend. Ball नीचे आ रही होगी, right? So अब इसका motion start हो गया है. T is equal to 4 seconds से onwards up to 6 seconds. मतलब this is total of 2 seconds. Right? So in 2 seconds में ball will come down and it will accelerate downward and that final velocity V can be found using the formula U plus AT, which is the first equation of motion. Initial vertical velocity at maximum height is 0. Downward acceleration होती है which is 1.6 and time of falling downwards is this. From here, the vertical component of velocity is coming out to be 3.2 meters per second. 3.2 meters per second. So you have this vertical velocity, you have this horizontal velocity. How can you find out the net velocity? How can you find the overall velocity? आप overall velocity find out करेंगे using vertical velocity and horizontal velocity and its resultant. ठीक है? Vertical component of velocity just at t is equal to 6 is 3.2 and horizontal component of velocity is constant throughout and that is 11.1 meters per second. ठीक है? How can you find out vertical overall velocity after 6 seconds ball descend कर रही होगी? So you can find the overall vertical velocity using Pythagoras theorem. V square is equal to 3.2 square plus 11.1 square. V is equal to under root of 3.2 square plus 11.1 square. And this value is coming out to be 11.55 meters per second. So the velocity of this ball on the moon at t is equal to 6 is 11.55 meters per second. अच्छा, अब स्टूडेंट्स को ये चीज डिफिकल्ट लगती है इन MCQs बिकॉज MCQ में ये 1 मार्क के लिए आएगा और हमने जो सारा प्रोसेस किया है वो 10 मिनट्स का. मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक मेथड टीच किया हुआ है जिसमें आप अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन को कंबाइन करके सिंगल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं. फॉर दैट इन केस ऑफ अर्थ acceleration is considered to be minus 9.81. For that you have to see the previous videos why we take it minus 9.81. So in case of moon, if we are going to combine upward and downward motion, the collective acceleration will be minus 1.6. So अगर आप इसको एक सिंगल इक्वेशन से करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए what is initial vertical velocity? Initial vertical velocity is 6.4 meters per second. आपने फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आफ्टर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स और आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस 1.6 meters per second स्क्वायर. राइट? सो अगर आपने कंबाइंड मोशन पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन पे, तो आप g की वैल्यू माइनस 1.6 कंसिडर करेंगे फॉर केस ऑफ मून. अच्छा, अगर अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड वाली वेलोसिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन. राइट? तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो दिस वेलोसिटी इज पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी इज नेगेटिव. और अगर वेलोसिटी का आंसर जीरो आ रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी कहां पर बच्चों जीरो होती है? वर्टिकल वेलोसिटी जीरो एट मैक्सिमम हाइट. तो हम डायरेक्टली इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आई इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अभी भी ऊपर जा रहा है. ठीक है? अगर वेलोसिटी का साइन नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है ये नीचे आ रहा है, इट इज कमिंग डाउन. सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स u प्लस at. हमने प्रीवियसली ही डिसाइड कर लिया है कि बॉल हैज रीच मैक्सिमम हाइट एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स के लिए ये फॉल कर रही है. तो आप क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? बिकॉज द बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड, इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, यू आर एक्सपेक्टिंग अ नेगेटिव आंसर. अच्छा, प्रीवियसली हमने ये डिसाइड कर लिया है कि जो वेलोसिटी एट 6 सेकंड इज 3.2 meters per second. नाउ
The vertical component of velocity is found using this equation u plus at. Initial vertical velocity is 6.4. A will be minus 1.6 multiplied by 6. यहाँ से आपके पास final vertical velocity आ जाएगी, which is 6.4 plus minus 1.6 multiplied by 6, and this value is coming out to be minus 3.2 meters per second. ठीक है, तो अगर आपने सिंगल इक्वेशन से करना है, यू विल ऑप्ट दिस टेक्निक कि आप अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन को कंबाइन करके स्टडी करेंगे. फ्रॉम देयर the vertical loss is coming out to be minus 3.2, and this minus sign shows that object is coming downwards. Right? Object is coming downwards. So once again, overall velocity find out करने के लिए you will apply this Pythagoras theorem, vertical velocity square plus horizontal velocity square, and your final answer will come out to be 11.55 meters per second. Right? Similarly, आप ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट करने के लिए भी कंबाइंड मोशन लगा सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड इनिशियल एनर्जीज एंड यू कैन फाइंड फाइनल एनर्जीज, and those both of energies will be equal because at every point in the projectile motion law of conservation of energy is observed. जो एनर्जी स्टार्ट में होगी वही मिडवे पे होगी, वही टॉप पे होगी, वही डिक्लाइन करते हुए होगी. राइट? सो द law of conservation of energy is observed at every time. So we have discussed projectile motion and questions related to projectile motion in very much detail. So we are ending the chapter of kinematics. In the next class, we will be discovering more chapters of A1 and A2 physics. So stay tuned and keep loving yourself. Thank you.